reports which are sort of going around the town about saying, Indians have put down an F-16. I have no confirmation on that. Then saying that Indians have put down 2 aircrafts. That report was actually yesterday's report that a JF-17 and a J-10 had been put down by the Indian Air Force or the Indian Air Defense. Hello. Right. No, please, sir, go on. So I the think point that's is, another guest joining us, but please go on. So what happens is that I would recommend calm to people who are living on the borders. They should have full faith in the Indian Armed Forces, because Indian Armed Forces have absolutely top class capabilities and the resilience of its troops to handle whatever comes their way. The Indian response is going to be very strong, it's going to be tough, and it is going to make Pakistan think 10 times before again they start doing something later this night. Okay? The only thing is that India is a responsible power. Unfortunately, I cannot say the same thing about Pakistan and its leadership. Right. And given what we've been talking about, sir, over the last few episodes of Point Blank, that Pakistan Army at this point in time finds itself pushed to act, to do something, to come back on the... Okay, I think we have another guest joining us, but I will request my crew to ensure that mic is muted so that we can continue this until they're absolutely ready and can join us and can talk to us. Having said that, sir, so as we've been talking about over the last few episodes of Point Blank, what Pakistan is trying to do is to save face. And by Pakistan, I mean Pakistan Army, because we all know the civilian administration in Pakistan does not really hold any power. It is the defense minister's job to run from pillar to post and make all kinds of absurd statements without evidence, for which he's been asked by international media. For example, he claimed that a bunch of Indian jets have been downed by Pakistan. He could not produce any evidence, and he cited that social media is where he would look for evidence. So in that sense, Pakistan is trying to escalate. India is trying to ensure that we don't want any escalation. But in the middle of all of this, sir, the civilians on this side, some of them are dead. Until the evening, we had update on 16 deaths. So as far as the people of the country are concerned, what would you like to say to them? Because as far as war is concerned, losses generally tend to be on both sides. You see, what is happening is, when we are talking about losses on the Indian side, these are losses on the LOC due to firing. These are not losses due to drones. Let me say that to you very clearly. First of all, so I'm making a distinction between the firing, cross-border firing, as well as the drone attack across the international border. That is the point I'm trying to make. Now, the issue in this is that what has happened is that in Pakistan, since its inception, the only thing that has been continuously in power is the Pakistan Army. It is the Rawalpindi GHQ which rules the Islamic Republic. Now what has happened is, on May 6th, the Indian Armed Forces have humiliated the Pakistan Army. So the Pakistan Army has to come up with something to justify its face before its own domestic audience, which they have pumped up against India since 1947. So the Pakistan Army will continue to do this, and will only learn a lesson once it is given a very hard rap on its knuckle and on its head. Right. Viewers, at this point in time, we are joined by a civilian in Jammu. He is a businessman. We're not going to disclose any more information about him because he is not comfortable with that, and we will respect it. He has his family along with him in the drawing room of his house. He's just come back from work about an hour and a half ago. Since then, he's been trying to figure out what to do,
You might find the frame that we are about to put out for you a little strange, because that's not what we generally do on television, on digital media. And that is show you something completely in dark, but that's what you're going to see. And that is because there is a blackout, which is at this point in time in Jammu in place. We have Mr. Sethi joining us. Sethi ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? Thank you so much. आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल फील करें सेठी जी, feel free to respond to my question. आप It's been half an hour, 45 minutes for you, sir, since you've come back home. Your family is there. You have your wife, you have your kids. बोला या हमने देखा कि ये स्टोर्स बंद होने लग गए, हमने भी अपना स्टोर बंद किया, वी क्लोज्ड आवर स्टोर एंड वी रियली रैन अवे। और अब जो पता चल रहा है कि अब हम लोग एक रूम में हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, माय पेट इज देयर, वी ऑल आर स्कैर्ड कि मतलब अब आगे क्या होगा। और आवाजें आ रही हैं यहाँ पे बॉर्डर से, मतलब इट्स वेरी टेंस्ड जी, सिचुएशन इज वेरी टेंस्ड जी। और आपका घर, जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो एयरपोर्ट है उससे, तो आपको वो भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो अटैक है जो शुरू हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो चल रहा है इस वक्त। सर सब कुछ दिख रहा है, सतवारी एयरपोर्ट पे भी हो गया है, सब कुछ हो रहा है। मेरे एम्प्लॉयज रहते हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास, वो बोल रहे हैं सर हमारे घर हिल रहे हैं, इतना ये मेजर अटैक कर रहा है जो पाकिस्तान है। जी जी। तो और एज अ आपकी फैमिली सिविलियन आपके आई साथ है इस नीड वक्त, की। सर? हाँ सर। आपकी फैमिली इस वक्त आपके साथ है, सर? सर हाँ, फैमिली साथ में दूसरे रूम में, मैं अभी अंदर आया हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल। whatever you बिल्कुल। think is appropriate, please do that. Whatever या precautions you need to take, please take माय them. सन इज 3.5 years ओल्ड, उसको तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है। बोल रहा है पापा ये लाइट्स ऑफ क्यों हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, ये लाइट्स क्यों ऑफ है, लाइट्स ऑन करो। मैं उसको क्या बताऊं क्या हो रहा है, व्हाट इज द Hmm. सिचुएशन, वी आर टेंस्ड। Right. You also हम have a लोगों ने pet. अभी देखा है, मैंने कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ से जी। वो मतलब आग के गोले जा रहे हैं वहां पे, मतलब हम्म। वो रियली, मतलब देख के इंसान के मतलब वो हो जाता है। मैं अपने क्रू से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप बात कर रहे हैं मुझसे, यस। तब वो जो विजुअल्स आपने मुझे थोड़ी देर पहले भेजे थे, वो अगर प्ले कर बिल्कुल सकते हैं हम तो। और आई एम श्योर मेरा क्रू इस वक्त सुन रहा है, वो कोशिश करेंगे प्ले करने की। बट सर, बिल्कुल सर। आप हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि ये किस वक्त, अराउंड व्हाट टाइम did the explosions and whatever you saw in the sky, is the sky going red start? सर इट स्टार्टेड अराउंड, मुझे पता मेरा स्टोर का क्लोजिंग टाइम है 8:30, तो जी। मेरे कुछ कस्टमर्स भी थे, तो इट वाज अराउंड 8:15, हम्म 8:15 और 8:18 हम्म एग्जैक्ट। हम्म सो आवाजें आई, मैं बाहर आया तो मैंने देखा ये तो वो जा रहे हैं, आग के गोले जा रहे हैं जी। सो उसके बाद सबने बंद किया, स्टोर बंद किया, एवरीवन वाज रनिंग, मतलब पैनिक हो गया था जम्मू सिटी में, इट वाज पैनिक। हम्म एंड ये आई डोंट नो, मैंने तो ये देखा ही नहीं, इसमें थोड़ा नेट से पता चला, तो काफी जगह पे ये इन्होंने, इंडियन आर्मी ने काफी किया है कि वो गिरने नहीं दिए हैं, मतलब हम्म तो वो हवा में ही वो कर दिया, तो मतलब थैंक जी गॉड। जी या जी। सिरी जी, अब हमारे साथ रुकेगा, हमारे साथ इस वक्त कर्नल रोहित देव भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टॉक टू हिम एंड आई विल कम बैक टू यू, सर। और ओके इन द सर। मीन टाइम सर, अगर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है आसमान में होता हुआ, फील फ्री राइट। सर, आप बालकनी जहां भी आपके लिए सेफ हो, फैमिली के लिए सेफ हो, वहां तक प्लीज जाइएगा। अगर नहीं जा सकते तो बिल्कुल मत जाइएगा। बट ओके हैविंग सेड सर। दैट, वी हैव कर्नल रोहित देव also joining us. ओके Colonel सर। Dev, I'm sure you must have been talking to your sources in Jammu. What have you heard? What's happening? And what do you think India's response is going to be in the light of what Pakistan has again? And I say again because last night and early this morning, which is the morning of, let me check the date because we've been covering it for a while. On 7th, Pakistan tried to do, that is, tried to target multiple Indian cities across Punjab, Kashmir, and Gujarat. And after that, this has come in. Before this, just a few hours ago, the Indian Ministry of External Affairs held a press conference where we also had armed forces personnel joining and talking about what India did the night before.
which is when, of course, India was trying to neutralize the attack which started from Pakistan, wherein it tried to target multiple Indian cities. And after that, this has happened, despite India underscoring again and again, we don't want an escalation. Let me just emphasize that it is an ongoing, military war process, and just tell them I'll join them in some time. And what has happened here is that Pakistan did that attack on the civilians, and obviously the casus belli was in the proactive mode on our side, so we had to take an action. And we took that action, and you heard the first press brief, which was given by Mr. Mishri and our two young officers, that we were focusing on terrorism with precision and no army targeting and non-escalatory in nature. Now, these are in war. When you start something, going to happen. I was privy to something in which people were debating even yesterday. What will Pakistan do? Will it do? Will it not do? Will it be under any pressure? The answer is not from the external part. Pakistan internally has to act. If Pakistan army, after we have stuck 9 targets, we can call it, acts of terror, and we are punishing, which is a correct fact the world acknowledges, and that's the norm in the world as well. However, you think it from the perspective of a country where the polity is weak, the army calls the shots, and the army has trained and is in cahoots with the terrorist network of Pakistan, which not only does what they want in Pakistan and across the border, they also export terrorism in other parts of the world. And you have seen a Pakistani hand in nearly 80 out of 100 terrorist attacks in the last 10 years. So that is the country you are looking at, the face value. Now, when you see this country from any other perspective, today, when you say escalation, I'm quite sure we understand what escalation is, right? And in terms of escalation, the second casus belli was created when Pakistan started, striking the areas of Jammu, Bidibari, and that Arania area. And that's the area which traditionally they have been doing every time. Every time they want to escalate, get our attention, get us to talking table. It has been happening for decades. It was a long time that we called the bluff on this one. So this time we have called that bluff with a very graduated response to take on some, areas in Sialkot and Lahore and other areas as well. In fact, now what will happen? Yeah. Sorry, Colonel Dev. I'm interrupting you for a reason, because I just got this update that the Indian Air Force, Indian Air Defense, in fact, has intercepted Pak drones in the Uri sector, sir. Yeah, so Uri sector is one part. We've also, as per reports, brought down their AWACS in the southern theater. And there has been a movement in Jaisalmer area as well. So let me put into perspective, because I see Mr. Alok Bansal, in your Captain Alok Bansal, who is a senior and a very revered, thought leader here. So I'll leave some matters for him as well, because I'll have to go somewhere. But let me just, say a few pointers about the Jaisalmer part. Why exactly did Pakistan try to strike Jaisalmer aerially? The reason is our fleet is currently in the Arabian Sea, and there is a sort of gadget we have which directly looks into that area and port of Karachi from that vantage point. So I think they thought they are wise, but I think they are otherwise. And with this kind of an escalation going all front from Jammu to Jaisalmer. So while Jammu, we have been always a little more cautious. We have had more things to do with counteroffensive, because there is a well laid out obstacle system on the other side of the border as well, which gives us enough time to discern Pakistani capabilities from the bulge, Shikargarh bulge. They will go north, or they will go, south, or they will come in east. Those options get generated. In the Jaisalmer sector, Pakistan has got a problem, because it has created assets with a lot of money infused from China and other places. These assets Colonel are Dev, national I'll come back assets. to you. I'll come back to you. The reason I'm interrupting you is because I quickly want to go back to Mr. Sethi here, because of course he is in Jammu, he is with his family, and there is a blackout which is in place in Jammu at this point in time. So I want to talk to him a little bit more before I come back to you. So please stay with us. Mr. Sethi, can you hear me, sir? Yes, Ashish. Mr. Sethi, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. Can you hear me? Hello. हाँ जी सेठी जी। हाँ जी सर। तो सेठी जी, इस वक्त आप हमें बता सकते हैं इस वक्त जम्मू में क्या माहौल है, जम्मू शहर में क्या माहौल है? सर आफ्टर 5-10 मिनट सर आवाजें आ रही हैं बीच में, इसकी मतलब आवाजें बीच में आ रही हैं, मतलब बीच में, इट्स नॉट नॉर्मल जी। और आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, 3.5 years old।
3.5 years old, your youngest. Yeah. वो इस वक्त आपको आई एम श्योर परेशान कर रहे होंगे, आपकी वाइफ को बहुत परेशान कर रहे होंगे कर रहा because... है, वो बोल रहा है पापा लाइट ऑन करो, पापा लाइट ऑन करो। जी, क्या कहा पापा, आपने उनसे? मैंने बोला बेटा आप खेलो, उसको मैंने अब क्या करूं, मैं थोड़ा सा उसको मोबाइल दिया एंड टॉयज दिए कि आप वहीं खेलो, उसको कुछ बोलता पापा लाइट ऑन करो। क्या बोलूं उसको क्या पता चलेगा व्हाट टू जी डू। जी। और अब आपके पड़ोसियों का इस वक्त क्या हालचाल है? आप उनसे टच में है, बातचीत हो रही है? क्योंकि आई एम सर श्योर अभी अभी सब... बात हो रही थी तो वही है कि किसी ने इन्वर्टर की लाइट ऑन की थी, तो मैंने उनको कॉल किया अपना प्लीज लाइट ऑन ऑफ करो आप 30 क्योंकि मिनट्स डर बैक। ये है कि अगर लाइट ऑन होगी तो शायद अगला टारगेट वो हो। यस सर, मेरे कर्टेन्स इतने स्मार्ट नहीं है, तो मैंने अभी इसके ऊपर एक कुछ और डाला है कि कुछ अंदर से कुछ लाइट ना आए। जी जी वी आर वेरी केयरफुल कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए आगे। हमारी जी फैमिली है साथ में हमारे। जी या जी। आपकी वाइफ से बात हो सकती है क्या? अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं सेठी जी, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके आपकी कन्वीनियंस इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर हो सकती है तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू टॉक टू हर सर। सर, अगर 2 मिनट दोगे तो हो जाएगी। 2 मिनट्स मुझे वॉशरूम में है। आई बिल्कुल गिव सर। इट। सो व्हाट आई विल डू इज दिस, दैट्स या फाइन सर। सो व्हाट वी विल डू इज दिस, या हम 2 मिनट बाद आपके पास वापस आते हैं। इन द मीन राइट टाइम सर, वी राइट सर, हैव अनदर गेस्ट ज्वाइनिंग अस। राइट सर। In fact, actually, let me check with my crew if we have another guest joining us or not. बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अपनी इंडियन जी आर्मी के लिए, उन्होंने जितना हमारा साथ दिया है, जो किया है इन्होंने, इंडियन आर्मी ने किया है, हैट्स ऑफ। जय हिंद, जय हिंद, जी। जय क्या हिंद फॉर देखना, आपने क्या आवर देखा इंडियन आर्मी। अपनी, आपने क्या देखा? सर इंडियन जो आर्मी का जैसे जो एज अ एक्शन या रिएक्शन लेमैन, था, अपने शब्दों में बयान कर दीजिए हमारे लिए सर। एज अ लेमैन मैंने देखा वो लाइट्स आ रही हैं और उसको कुछ बीच में इंटरेक्ट कर रहा है, जो मैंने देखा है। फिर मैंने अपने कुछ लोगों से पूछा, तो वो बोलते हैं कि वो डिफ्यूज किया है, कुछ चीजें डिफ्यूज हुई है वहां पे ऊपर, जो उनकी मिसाइल्स होंगी वॉट एवर। एज अ लेमैन मैं आपको बात कर रहा हूँ। सो जी उन्होंने जी बोला जी हुआ है, तो मतलब जो हमें इंडिया को सैल्यूट करता हूँ, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ इस चीज में। जी मैं पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है। जी आई एम जी प्राउड टू बी इंडियन इस चीज में। जी। तो सर आई विल विल बी गिव यू... बैक, आप प्लीज कंटिन्यू करो। जी जी बिल्कुल। राइट। Colonel Dev, I'll come back to you, sir. As you just heard, Mr. Sethi is a civilian. He's a businessman. He is in Jammu. He दूसरे ऊपर stays जाओ, 2 मिनट में जा। he stays very close to the Jammu airport. I've been to his business establishment in the past. It was some years ago, but I have met him at his shop, and we just heard from him. I think Colonel Dev has gotten disconnected, but that's all right. In the meantime, we will talk about what has happened in Jammu. Pakistan tonight, earlier, decided to escalate something which India has been specifically asking Pakistan not to do. We have sent very direct signals. Yesterday's press conference held by the Ministry of External Affairs, where we also saw 2 female officers from the Indian Air Force and the Indian Army tell Pakistan that we are looking to target the terrorist centers inside Pakistan. We did. The strike lasted about 25 minutes from 1:05 a.m. till about 1:30 a.m. And during those strikes, India's entire effort was to only target the terror centers, not military infrastructure, not civilian infrastructure. And that was what we communicated to them very clearly during that press conference. And today as well, that's what we did. Despite that, last night and early morning on 7th, Pakistan tried to target 15, as many as 15 Indian cities. We don't know what the targets were as far as these cities are concerned. They could have been military, they could have been civilian. But before they could hit their targets, the Indian air defense system intercepted these incoming drones and missiles from Pakistan. They were neutralized. No harm caused, but in the heavy artillery firing, which across the border, LOC, is going on ever since, 16 Indians have lost their life. Multiple, at least as many as 3 dozen are injured. Among them,
women and children, not just in the injured, the number of injured, but also in the number of dead. That is what Pakistan decided to do on the night of 7th and the early morning. Today is 8th. At this point in time, it is 11:19. And we're coming to you live because tonight Pakistan decided to attack Jammu. What was the intention? Which targets Pakistan intended to strike across Jammu at this point in time? We don't know. We don't have clarity on that. But we have tried to come to you with whatever verified information and on-ground people that we could talk to. We were just talking to Mr. Sethi. I think he'll be joining us soon again. But in the meantime, there are some updates which have just come in. So I will read them out. Kishangarh, Bhuntar. Bhuntar is very close to, it is in Kullu. It is very close to a very popular tourist destination, Kasol. Ludhiana. These airports have been temporarily closed. These are small airports, Kishangarh Airport, Bhuntar Airport, Ludhiana Airport. I've seen all of them personally. They're very small airports, but they have been closed. Blackout is in place at this point in time across Punjab. Actually, in particular, in Firozpur in Punjab, Indian Air Defense is continuously intercepting Pak drones. It did that in the Uri sector. There is a 2-hour blackout which has been announced in Punjab's Patiala. And military has confirmed, the Indian Army has confirmed missile drone attack by Pakistan on at least 3 bases. We're only sharing with you the information, the pieces of information which are verified and confirmed. We're not in a hurry to give you the latest episodes, the latest updates, I'm sorry, because a lot of those are floating around on social media, on X, on other platforms. We're only giving to you what is coming to us after being verified with multiple sources, some of them ex-army personnel, some of them currently serving, some of them civilians on the ground, and of course, our own reporters on the ground as well. Now, the Indian Army, as you might know, on Thursday confirmed that the military stations of Jammu, Pathankot, and Udhampur, which are very close to the international border, were targeted by Pakistan using missiles and drones. However, there was no damage or loss. As far as tonight's attack is concerned, based on the reports that we have coming in at this point in time, that is also the case tonight. Pakistan has not managed to strike any targets of value. At this point in time, I'd like to go back to Mr. Sethi. He is, as I mentioned earlier, a businessman who has his enterprise located in Jammu. He was with us earlier. He is with his family. There is a blackout in place in Jammu. And his family, which also includes a young one, just 3.5 years old, and a pet, a dog perhaps. Mr. Sethi, you're with us? Yeah. Thank you so much. Thank you so much for staying up so late in the night and telling us what's happening on the ground. Is your wife with you, sir? Yeah, she's with me. Please, come here. Hello. Yeah. Thank you so much. With folded hands, आप Yeah. हमसे बात कर रहे हैं. No, that's okay. But it was such a panic situation. We were coming back from somewhere and we were outside and I saw something bursting in the sky and I thought that there are firecrackers, but then it was not firecracker. After 1 minute, somewhere around 8:15, I guess. Yeah, it was 8:15 and then we came inside. There was totally blackout and then the hooting of alarm. And we were scared just because, our dog was so scared. Everyone around was so scared. We were getting so many calls from our neighbors and our family, friends. But I hope Indian Army has done the justice because we are getting news and we are watching the news in the phone. So hats off to Indian Army and we are with them. So I hope everything will be fine soon. Mr. Sethi, how's your young one doing? You have a young child at home.
Actually, he's not aware of what is happening around. He's just roaming around and he wants to watch TV, and but we are telling him, you cannot watch TV, just sit and do coloring, because we are just, there is only candlelight, as you can see. There is totally blackout. So we are engaging him with something. So, but he is okay. Earlier he was a little bit, in panic situation, but now he's okay. He's stable. I want to go outside. He wanted to go outside, but now he's okay. He's fine. Right. And are there any noises that you can hear at this point Yeah, in time? yeah. Because I'm assuming you're After, inside. yeah. After like few minutes, we were hearing noises, continuous noises of, shelling. So, we was too scary. it's scary. It's actually Right. scary. It's okay. You have a dog We or have do you to- have a cat? We have We a have a pet. dog. We have a dog. He was scared and he He ran ran out, but away. now he's back He's home. back. We are happy. He's back, and I hope everyone is safe at Gabru? their place. So we are praying for everyone, that Jammu people and everyone around is going to be safe. Right. While we'll not be sharing your names, I've just been using yours and your husband's last Yeah. name. Yeah. But if you could share, what's your dog's name, ma'am? Gabru. His name is Gabru. Gabru. Yeah. He's That a is an party dog. amazing name to have chosen for your dog, ma'am. Let me Yeah. compliment you on that. But please stay assured, like the Indian Army, rest of the Yeah, nation. yeah, is with you. we have like full We have trust on full our trust on army, Indian and we Army. are with them. And hats off to our army and defense and Yeah. everyone who's like, Hats off they to are. all the jawans. Yeah. Right. In fact, we have another guest joining us from Jammu. Mr. Sethi, please, you can rest. Thank you so much for Thank you taking the so- time and Thank talking you. to us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please attend to your kid and, of course, Gabru. I'm Yeah, sure. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Thank you, Sethi ji. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. sir. We also have Mr. Rohit joining us from Jammu again. He is, without trying to actually tell you about his exact location, he is in Jammu, and that should about be enough, very close to the border. हेलो रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल। रोहित जी, रात के 11:30 बज रहे हैं। जी मुझे पता है आपका घर कहाँ पे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ना बताएं तो अच्छा है। जी बट आपका घर मुझे ये भी मालूम है कि बॉर्डर से कुछ खास दूरी पे नहीं है। बिल्कुल सर, इस बिल्कुल। वक्त वहां पर माजरा क्या है, वहां पर क्या चल रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? आप इफ यू कैन शेयर दैट विद अस। यस सर, अभी तो जो थोड़ा सा शांति है। अभी से लगभग 2 घंटे पहले, 3 घंटे से ब्लैकआउट चल रहा है, और 2 घंटे पहले यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो है ड्रोन अटैक्स किए गए थे, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने टोटल न्यूट्रलाइज और डिफ्यूज कर दिया है। बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। हमारे जो बॉर्डर विलेजर्स हैं उनको यहाँ पे कैंप बना करके कैंपों में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी सिचुएशन जो है इस समय टेंस है। वी आर द सेकंड डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड वी स्टैंड विद इंडियन आर्मी। कैन यू डिस्क्राइब टू अस रोहित जी, यस, किस वक्त के आसपास, किस समय के आसपास, what started, what actually made you realize where you were, what was happening, what were you doing? it's around 8:30 to 9 p.m. 8:30 to 9 p.m. And what did you see? What did you hear? Where were you at that point in time, sir? Yes, on that time we are in a temple. Aarti was going on, and we see red गोला टाइप, मतलब रेड राउंड फिगर। आसमान में आपको कुछ लाल रोशनी दिखाई दी? हवा में लाल रोशनी तेजी से आती हुई दिखाई दी हमें। तो देन हमने देखा कि वो कहीं से दूसरी तरफ से उसको कोई चीज हिट करती है और वो नीचे गिरती है। तो इस तरह से हमने देखा। बिल्कुल देखा। मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं जिस समय यहाँ पे, जो हमने अभिनंदन भी यहीं से गिरे थे अप्रोक्सीमेटली। जब उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था तो यहीं से, हमारे यहाँ इसी सेक्टर से बिल्कुल हमारे पीछे जो पहाड़ी आपको दिखाई देगी, तो यहीं से हम बिल्कुल एलओसी पे हैं। वी आर द सेकंड डिफेंस ऑफ।
मैंने देखा वो इलाका। वी आर द सेकंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, और हम हिंदुस्तान की आर्मी के साथ हैं और हमें पूरी आर्मी पे पूरा भरोसा है। जी। अच्छा, और जब जिस वक्त ये शुरू हुआ, और मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूं आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं, आप उस वक्त जी जी वहां पे होंगे तो। जी और आज थर्सडे, आज शाम की बात है, ये जाहिर सी बात है जी जी 8 सवा 8 बजे जी जो कि आप बता रहे हैं। तो जी जी। जाहिर सी बात है, जहां तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया है, तो आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो बाजार तो खचाखच भरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बाजार के लिए एडवाइजरी पहले से जारी हो गई है। हमारा पिछले 2-3 दिन से बाजार जो है वो शाम को हम 7:30-8 बजे जो हमारे वो है एडमिनिस्ट्रेशन बंद करवा देती है, और टोटल लाइट्स ऑफ अच्छा। करने के लिए पहले ही कह दिया गया था। जी। एडमिनिस्ट्रेशन हमें बड़ी सपोर्टिव है, और हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आज यहाँ पर हैं। कैंप किया हुआ है उन्होंने उन्होंने भी जो हमारे इस चौधरी जी। समय, हाँ हाँ, सुरेंद्र चौधरी जी हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज जो हमारे रिफ्यूजीज जो शिफ्ट हो रहे हैं कैंपों में उनका दौरा किया। वो भी अभी नौशहरा में ही हैं, उन्होंने भी, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है हम लोगों आपकी का, हम भी। उनसे लास्ट बात कब हुई थी? क्योंकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका फोन बिजी था। जाहिर सी बात है बिजी होगा, क्योंकि उनको जी जी जी। दसियों लोगों बोल के फोन फोन आ रहे होंगे इस वक्त। फोन इसलिए बिजी है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 1,000 पीपल्स आर इन द कैंप्स, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज इन द कैंप्स। क्योंकि आज ही उनको लाया है कैंपों में, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा सहयोग कर रही है। तो मेरी लास्ट उनके साथ बात जो हुई है शाम को 6:30-7 बजे के करीब हुई थी। उसके बाद नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क इशू इज आल्सो देयर। जी जी जी। अच्छा, जी जी। ये जो आप कैंप्स की बात कर रहे हैं, इन कैंप्स में किन लोगों को कहां से लाकर रखा जा रहा है? शेर मकड़ी, या जो हमारा फॉरवर्ड पोस्टेड है, जांगड़ सेक्टर है जो हमारा, उसकी जो शेर मकड़ी, अगर आप आए हैं यहाँ तो आप जानते जी होंगे। जी जी। शेर मकड़ी जो कड़ाली का एरिया है, और उस तरफ दूसरी तरफ लाम लड़ोका पुखरनी का जो एरिया है। अभी हम्म। तो गवर्नमेंट ने पूरे बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं, बट अभी एक्टिवेट जो हैं वो 3 से 4 कैंप जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हैं, जहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर जोरी, एडीसी नौशहरा जो हैं वो उसको पूरा चेकआउट कर रहे हैं। हमारे जो मजिस्ट्रेट ड्यूटीज हैं लगा दी गई हैं सारे। पूरा जो एक सरकारी अमला जमला है वो पूरा उसकी देखभाल कर रहा है, और लोगों को वहां से लाया जा रहा है जो जिन लोगों के पास बंकर नहीं है। मैं आपको बता दूं यहीं कि जी। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बंकर नहीं बने हुए हैं, तो बंकर रोहित की जी, बहुत शॉर्टेज है। जी जी माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं हमारे बाकी व्यूअर्स को जिनके बात शायद ना पता हो। वो जो पूरा बॉर्डर वाला इलाका है, जो आपका नाम नहीं लेता, लेकिन जब जो पुरानी मुगल रोड है उसके सहारे सहारे चलता है, वहां पर जम्मू में जितने घर हैं, जी जो भी अफोर्ड कर सकता है वो कोशिश करता है कि अपने घर में किसी तरीके का छोटा मोटा बंकर बना के रखे। जी वो जी एक सेफ स्पेस होता है जहां पे जाके वो रह सकता है। जी तो जी आप जी कह रहे हैं कि ये लोग जो फॉरवर्ड बेसिस पे थे, एलओसी के पास थे, जिनके पास ये बंकर्स नहीं थे अपने घरों में या घरों के आसपास, उन्हें यहां पर लाकर इन रेफ्यूजी कैंप्स में जिनकी आप बात कर रहे हैं वहां पे रखा जा रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हमें बंकर्स दिए हमारे इलाके में, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी जो है वो पेंडिंग है। वहां पे कुछ गवर्नमेंट का ही क्लैरिकल इश्यूज की वजह से उसको नहीं स्पीड अप किया गया। तो आज लोगों ने अपनी ये डिमांड्स भी चौधरी साहब के आगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा कि वे जम्मू पहुंचते ही जी वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और इसको मसले को हल करेंगे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर जो हमारे रिफ्यूजीज हैं उनके लिए परमानेंट जो है लैंड अलॉट हो जानी चाहिए, कहीं पर रिफ्यूजी क्वार्टर्स बन जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम बॉर्डर को छोड़ सकते हैं, ना ही हम छोड़ने वाले हैं। हम चाहते हैं कि कब 1965 देखा, 71 देखा, हमने 99 में वार देखी। जब जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन में जो तनाव आया है, तब तब हम लोगों ने ये फायरिंग फेस की है ये। तो तब तब हमें वहां से कैंपों में निकलना पड़ा। तो एक परमानेंट जगह होनी चाहिए जहां पर हमारा कोई ठिकाना हो, जहां के हम इमीडिएट शिफ्ट कर सकें। ये एक जी। हमारा रहता है डिमांड ऑलवेज। रोहित जी, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, आपके पड़ोस में मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग होंगे। आ, जी जी 99 में जो हुआ, 71 में जो हुआ, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है 47 के बाद से, जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे आपका पंजाब हो चाहे आपका खासकर कश्मीर हो,
जम्मू वाला हिस्सा भी हो, मुगल रोड वाला इलाका भी हो, रजौरी, पुंछ, ये वाले जो सेक्टर्स हैं, उरी, ये सब हो, सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रंट है वो वहीं पे महसूस होता है। तो जी जी जी। इस वक्त जो पहले हो चुका है, जो आप पहले देख चुके हैं, और बीच बीच में भी पाकिस्तान कभी कभी गोलाबारी करता रहता है, गोलियां फौज के बीच में एक्सचेंज होती हैं, बट जो पुराने मेजर मसले थे, जैसे 99 हो गया, कारगिल के जमाने की बात हो गई, आई एम श्योर आपने देखा होगा वो, तो तब जी के जी। बीच में और अब के बीच में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पीछे की तो मुझे नहीं पता 65-71 की, लेकिन मैं 99 की बात करता हूं, जब कारगिल वार हुई या उसके बीच में, उसके बाद भी जब सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान करता था तो वो सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाता था। इस बार जो पुंछ में हुआ, और आप अगर वहां पर ग्राउंड में जाएं तो आप चाहे, पुंछ सिटी जो टाउन है, 70% जो है वो लोगों के घर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। और इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, बच्चों का कत्ल हुआ है वहां पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको, ट्विंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जो सिंह भाई जो ग्रंथी थे, गुरुद्वारा में पाठ कर रहे थे, उनके वो 3 भाई वहां पर शहीद हो गए। पुंछ में हम लोगों ने हमेशा कैजुअलिटीज देखी हैं, हम लोगों ने हमेशा बलिदान दिया है, लेकिन मैं आपके लिए यही कहूंगा कि आपने हमारे इस एरिया को तवज्जो दी है, लेकिन एक दुख रहा कि जो हमारा नेशनल मीडिया है उसने कहीं भी पुंछ जो है उसको दिखाया नहीं। सर हम ये पुंछ नेशनल के लोगों मीडिया हैं। में, सर हम नहीं नहीं, नेशनल मीडिया हैं। आपने दिखाया, इसलिए आपका शुक्रिया कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नेशनल मीडिया ने कहीं भी पुंछ को, बाकी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि टीआरपी के लिए चलते हैं, उन्होंने कहीं भी पुंछ की, जो पुंछ ब्लीड हुआ है, पुंछ के अंदर जो हुआ उसको कहीं नहीं दिखाया गया। जबकि पुंछ के अंदर बहुत जो है कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत हमारा नुकसान हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि ऐसा जो है पाकिस्तान का बंदोबस्त हो कि वो दोबारा ऐसा करने की ना सोचे। वो स्टैंड विद इंडियन आर्मी। जी। रोहित जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा, ये शायद पर्सनल क्वेश्चन है, बट मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सिर्फ आप नहीं जग रहे हैं, आप जम्मू में हैं, जाहिर सी बात है। इसका जो पहला परिणाम है जो पाकिस्तान ने आज किया है वो, आप फौज के अलावा, जो हमारी फौज वहां मौजूद है, जो हमारे फौजी वहां मौजूद हैं, उसके अलावा आप जैसे जो शहरी हैं, वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरा भारत देख रहा है, सुन रहा है। अ, तो उनके लिए अगर आप हमें बताना चाहें, और अगर नहीं बताना चाहते तो कोई समस्या नहीं है, प्लीज मत बताइएगा, इस वक्त आपका परिवार, जिससे भी आपकी बात हुई है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि भारत ने पूरी कोशिश ये की कि हम कोई भी सिविलियन टारगेट गलती से भी हिट ना हो, पूरी कोशिश की पाकिस्तान को हम बता भी दें बार बार कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम आपके सिविलियंस को हिट करें, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करें, हमें बस उग्रवादियों से, टेररिस्ट से मतलब है, और हम वही जगह को टारगेट कर रहे हैं। बट जी जी। उसका परिणाम अब यह है कि पाकिस्तान ने जो कल रात किया और जो आज रात कर रहा है, उसकी वजह से जो हिंदुस्तान के आम शहरी हैं वो परेशानी में हैं। तो अगर आप हमसे शेयर कर सकें रोहित जी तो प्लीज। मैं आपको बताऊं रोहित जी कि एक इसमें सेकंड, सॉरी, आपके आसपास, मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास अभी जो लोग ग्राउंड पे हैं, जो जी। जवाबी कार्रवाई में शामिल हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आया है, वो मैं पढ़ देता हूं, अंग्रेजी में है। नौशेरा सेक्टर से मैसेज है सर, कि 2 drones have been shot down in नौशेरा सेक्टर, heavy artillery fire on line of control in नौशेरा, and this is literally, I'm talking to somebody who is uh, a part of this retaliation which is being carried out by the Indian Army. And Naushera, for those of you who might not know, यस is यस यस यस, ही इज राइट, ही इज राइट। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने सही कहा है। ये अराउंड कोई 10 बजे की बात है, आर्टिलरी फायर हुआ, ड्रोन को मार गिराया गया है। कुछ चीजें जो हैं हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो बड़ा अच्छा जवाब दे रही है। आप बात कर रहे थे बच्चों की, बुजुर्गों की, बड़ा एक जी टेंस सा माहौल है।
जो हमारे रिलेशन में लोग बाहर हैं वो बार बार फोन कर रहे हैं कि आपको शूट एंड एबल प्लेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम लोगों ने तो ये ठान लिया है, हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है। जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी यही है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर इस समय बड़े टेंस में हैं, टोटल ब्लैकआउट है, कैंडल लाइट्स में है। और आपको बता दूं कि इस टाइम जो बच्चे हैं, बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, डरे हुए सहमे से खेल खूल के सो गए हैं। लेकिन हम लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, वो कल की रात भी और आज की रात भी क्या पूरी रात बोला जगते वक्त क्या में। बोला आपने उनसे, उनको सोने के लिए हमने भेजते वक्त? हमने उनको हमने उनको यही कहा सर कि कोई बात नहीं, डरो नहीं, ये ठीक हो जाएगा, हमारी इंडियन आर्मी के जांबाज हैं, उन्होंने सब ठीक कर दिया है। अभी तो शांत है, तो उनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सुला दिया है। लेकिन माहौल टेंस है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं। वो भी आज मैं आपको बताऊं कि बच्चे पूछ रहे थे कि पापा कल क्या होगा, क्या सुबह कुछ होगा, क्या हम यहाँ रहेंगे, क्या हमारा घर बचेगा। क्योंकि जो वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक पर, जो आप देख सोशल मीडिया पर, जो पुंछ अटैक्स के बाद लोगों के घरों का नुकसान वीडियोस आए हैं, कहीं ना कहीं आज आपको पता है बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, और देख के कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक दहशत का माहौल है। जी जी। रोहित जी जी, मैं एक बार ऐसा करता हूं, आपको थोड़ा बहुत इस पूरे इलाके का अंदाजा है। नौशेरा सेक्टर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 10, 12, 15 किलोमीटर दूर है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। जी जी और एक बार फिर मैं वो डिटेल पढ़ देता हूं जो मेरे पास, लाइक आई सेड, अभी अभी आई है। कंफर्म डिटेल आना, डिटेल तो पहले से भी थी, बट कंफर्म्ड आना, और जिसका मतलब है दिस इज फॉर आवर ऑडियंस, वी एटलीस्ट वेट फॉर 2 or 3 sources to verify this. And after that, I'm sharing this with you with some confidence, and that is that 2 drones have been shot down in Naushera sector by the Indian forces. Heavy artillery fire on the line of control in Naushera sector currently is going on. And somewhere close to that is, of course, where our last guest, Rohit Ji, was joining us from. In some cases, you might have noticed, as far as our guests are concerned, we have either only used their first names or their second names. We have not referred to their locations. The only thing that we have referred to is that they are somewhere in Jammu. And the reason we have done that is because we want to make sure that their security, their families, none of that is compromised. We have learned this lesson the hard way from some of the attacks which were carried out by Pakistan-based terrorists in the past. But on that note, I would also like to mention that there is another detail which has just come in, and that is that a Pakistani Air Force jet has been shot down in the Pathankot sector. This is in Punjab, about 110 kilometers from Jammu, by Indian Air Defense. Multiple sources have told this to news agency ANI, and there are more details, confirmation from the government, which is awaited. But this is massive, that a Pakistani Air Force jet has been shot down. And this has happened in the Pathankot sector, which means Pakistan Air Force, in an attempt, despite India underscoring, saying this again and again, we don't want an escalation. We're not interested in striking your military installations. We're not interested in striking your civilian infrastructure. Pakistan, of course, tonight, after doing and trying actually to do this last night, which is when they tried to strike as many as 15 Indian cities spread across Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat. These are the states which share the border with Pakistan. So Pakistan last night tried to strike 15 cities. India neutralized all of those drones, all of those missiles. We will, of course, wait for more verified details on that. But tonight, Pakistan tried another escalation. It targeted Jammu. Jammu was placed under a blackout. We've been talking to multiple people, multiple sources on ground, some of whom you must have just heard. Businessmen, normal people, everyday people, middle-class people, and some of our sources in Jammu who told us in very clear words, in very clear terms, that yes,
This has happened that, yes, Pakistan has attempted to strike multiple locations across Jammu. But as I just read out to you, a Pakistani Air Force jet, in response to the attack which Pakistan attempted, has been downed. This has happened in the Pathankot sector. And there is another update which has just come in, I'm sorry, that military stations of Jammu, Pathankot, and Udhampur in proximity to the international boundary were targeted by Pakistan using missiles and drones. However, there was no damage or loss. This is, of course, from yesterday. This is from Thursday. But as far as tonight is concerned, Pakistan fired multiple drones in the direction of Jammu. We were talking to some civilians who were in the Jammu city. And of course, several of them along the Mughal border. Some of you who are familiar with the geography of Jammu and Kashmir would know that we are talking about the old route before Jawahar Tunnel was, of course, built, which Indians used to take to enter Kashmir Valley from the Jammu side. It is along those border that, the maximum impact of the attack carried out by Pakistan tonight has been felt. And as far as that is concerned, in the Naushera sector, as I just read out to you a few seconds ago, and let me read out to you once more, that at least 2 drones have been downed in Naushera sector. There is heavy artillery firing, which was underway. And we got this update just minutes ago. And the next update that we have at this point in time coming in is based on a report from PTI, news agency PTI. And it says that explosions have been heard in Rajasthan's Jaisalmer. Now, remember, ladies and gentlemen, the border that India shares with Pakistan, the states which fall along that border at the top includes Jammu and Kashmir, if you look at India's map. Just under it is Punjab, then Rajasthan, and then Gujarat. So the Home Minister is, at this point in time, as per the reports that we have coming in, the Home Minister Amit Shah is talking to top officials of the border guarding forces. And there are explosions which have just been heard minutes ago in Rajasthan's Jaisalmer. Before this, we also told you that a Pakistani Air Force jet has been shot down in Pathankot sector by the Indian Air Defense. And before that, we also told you that in the Naushera sector, 2 drones at least have been put down by the Indian Armed Forces. And, there is, of course, heavy artillery and mortar firing, which is, currently going on. And I think this perhaps is likely to be a long night for the country. Civilians, military personnel, anybody and everybody who is in Jammu and Kashmir is up. We talked to several of them, some who are serving and cannot talk to us in front of camera, some who are civilians along with their families, also spoke with us, told us what people are feeling on the ground. And of course, we also talked to some ex-Indian Army personnel who gave us perspective on what Pakistan is attempting to do at this point in time. And this is, of course, not what India was hoping for. But since Pakistan has decided to take this route, India is responding as strongly as it can. And at the same time, trying to ensure that the people, civilians, the military personnel, of course, are as safe as they can be. We will keep coming back to you as and when we have any significant updates. But for those of you who have just joined us, I will take 8:15. That is when Pakistan started firing drones in the direction of Jammu, which is, of course, Jammu and Kashmir's winter capital, used to be. The people that we spoke to were largely from Jammu. And of course, they briefed us about the current situation in Jammu, which is where Pakistan, of course, launched several drones. All of them, as we are being told, have been neutralized by the Indian Air Defense. In
if we talk about, the sectors across the Mughal Road, the old road that Indians used to take into Kashmir Valley, because Jawahar Tunnel, of course, came into existence. That is the route that I'm talking about, and that is, of course, where the LOC, of course, goes through. So Uri sector, there was enormous amount of escalation and activity. Naushera sector, as I told you just a little while ago, 2 drones were put down by the Indian Air Defense, and heavy artillery fire and mortar fire was exchanged by the army personnel who are positioned and stationed there. Now, I'm going to leave you with some of the visuals which came to us a little earlier. Now, what you will notice is, some streaks of lights. Those are perhaps either the Pakistani drones or the countermeasures launched by India to deal with those drones launched by Pakistan. Largely, what you're going to see will look a lot like what you might have seen in videos coming out from Gaza. A lot of darkness, dark sky. Against that dark sky, the visuals of, again, in a cowardly fashion, what Pakistan decided to do. Once again, despite India making sure that it communicates to Pakistan very clearly that we are not interested in escalating. Ladies and gentlemen, on that note, we will wrap up tonight's coverage. We will leave you with these visuals. We will join you as and when there is a development. We are here, and we will only share with you verified information which has been authenticated after talking to people on ground, whether these are civilians or are reporters on ground or the serving military personnel or ex-military personnel. That is what our endeavor here is going to be on Hindustan Times. I'm Abhishek Singh. On that note, I will request you to pray for our brethren in Jammu and Kashmir, because they are, of course, just behind the front line, just behind our armed forces, but right where the attack took place tonight. On that note, thank you so much.